I would like to share my story, and before that, I would say that as Chandrasekhar was speaking of spirituality and magic, I'd say I'm a big fan. I enjoy reading about spirituality and about so there's a magic in life. I've always believed in that word, and I would like to share my stories. Of course, my biography after post my college or my graduation has been shared by Uma ma'am. Thank you, ma'am. Why did I choose law? One, and then how did I start my own law? Two. So why did I choose law? I was studying in 5th standard when I decided that I would want to become an IPS officer, because after seeing some of the Bollywood movies, I decided that yes, this would be an interesting stream. I spoke to my father, and my family background, my mother is a homemaker, my father was into litigation. He started his practice as a lawyer. I don't come from that kind of background, but from the city we used to stay in there was Faridabad was majorly dominated by Punjabis and Sindhis. And also Baniya. So he always used to tell me, beta, अगर धंधा भी करना है तो पंजाबी सिंधी की तरह कर, अगर करना है. And of course, there used to be stories about it. Then when I used to ask that why not civil services, उन्होंने मेरे को एक story बताई थी. उस टाइम पे हरियाणा में महम कांड हुआ था. उस टाइम पे the then chief minister of Haryana, I will not take names, people who would be aware about the situation. महम कांड के अंदर the son of the chief minister was arrested by a very honest IPS officer serving at that point of time in that district. That IPS officer, being the SSP, arrested him. Government change hui again after the tenure of 5 years. The same CM came into power. Then my father used to tell me, because he was in the prosecution department, the SSP, जो IPS officer, उसको suspend कराया गया. I will not take him. Google करोगे, you'll get to know who that IPS officer was. I'm talking about 90s. उसको सस्पेंड कराया गया. उसको सस्पेंड करा के चोरी के इल्जाम में, it was a mere theft 379 की धारा के अंदर उसको अरेस्ट कराया गया. And police station के अंदर that IPS officer was made to kneel down and उसकी छाती पे लात मारी गई by the same chief minister's son. So of course then he was reinstated after he fought in the CAT, Central Administrative Tribunal. He was deputed back to Gujarat from the Haryana cadre. That's a long story short. But my father told me that this is the state of affairs we are living in the country. He said that of course civil service is not bad. He said it's very good. You are the DM, DC, IPS बन के अपना जिला संभालोगे. But he said there's nothing like being an independent lawyer, which of course is very rare to hear from somebody who's already into service. आप government service में अगर आपके parents हैं तो usually आप सोचोगे, parents usually aspire कि आपका बेटा उससे बड़ी पोस्ट पे जाए. He was the head of the prosecution, he wanted me to go over. उन्होंने कहा बेटा कभी नौकरी के लिए apply मत करिए. Go and do your independent practice, become a lawyer. That is what he inspired me, or I would say he motivated me for going for law. I took up that option. In the 10th standard examination, board examination, I secured 91%. Which was a relatively very good percentage considering that period of time. आज के डेट में तो 91 is. So when I took 91%, मेरी स्कूल में humanities की stream नहीं थी. So मेरे को law करना था तो मेरे को humanities लेना था. So I opted for humanities. I wanted to opt for humanities. हम दूसरे स्कूल में गए, एपीजे स्कूल में. पूरे शहर के अंदर स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या कर सकते हैं? पूरे शहर में 2 स्कूल्स थे जिसमें humanities थी. One was APJ, which was a relatively better school. So we went to APJ, admission form भरा. जो एडमिन डिपार्टमेंट में थे, she made me speak to the principal. Principal के पास फॉर्म गया, उसने बोला I want to speak to the child. She spoke to me for half an hour. Why do you want to take up humanities after securing 91%? Are you not aware about other options available? मैंने कहा मैम I am. Most of my friends were doing engineering. Faridabad is known again as a hub of engineering, creating IIT toppers. We have done it twice. So I said ma'am I'm aware, but I love history, I love political science, and I would want to take law. So I would want to go for humanities. Then after speaking to me for half an hour, she spoke to my dad. My dad said the same thing. Let the child do what he wants to do. I took up humanities. 14 बच्चों की क्लास की स्ट्रेंथ होती थी 11th and 12th में. नॉन मेडिकल मेडिकल के 5-5 सेक्शंस होते थे 50-50 बच्चों के. हमारे सिर्फ 14 बच्चों की इतनी छोटी सी क्लास होती थी. And I was there since 91%. Most of the students were 50-60% teachers. जो उस टाइम सारे ऑप्शंस हो गए तो पेरेंट्स ने कहा चलो ह्यूमैनिटीज में आ जाओ. Again, that was a huge life learning. I never realized that humanities or those 2 years of schooling is going to change me, but it did. I was dealing with some of the smartest brain in the whole school. क्योंकि पढ़ाई में हमारे लिए कुछ होता नहीं था. जब बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, हम ह्यूमैनिटीज वाले क्लास 2 बजे के बाद अपने गप्पे लड़ा रहे होते थे. स्पोर्ट्स में फुटबॉल खेल रहे होते थे, अलग अलग उल्टी सीधी स्ट्रैटेजी बना रहे होते थे. थोड़ी बहुत 11th में गुंडा बदमाशी कर रहे होते थे. तो all those things used to happen. It was a brilliant learning phase for 2 years. I enjoyed it thoroughly. 12th standard में again I secured 94% in humanities, which was remarkably, I would say, very good, because humanities, history, political science, you never used to earn that much. In 2006, I'm talking about. I was again the state. I was in the state. I had a 3rd rank, state of Haryana again.
So again, I appeared for only one entrance examination because at that point of time, 5-year law had taken, or I would say, started taking place. In Delhi, there was only one university, the IP University main campus, or there were other campuses. Main IP University used to have 5-year law course. Delhi University had 3-year law course. So after graduation, if you would do it, it would be 3 years, and 3 years it would be 6 years. So if I do a joint course, it would be 5 years. I would be saving a year. I applied for that, and I applied for Stephens. So because my father said it will only make sense to drop a year in case you get through Stephens. Stephens से करना फिर अपना law for ladies से करना. I applied for Stephens for English honors, history honors. English honors again, they used to interview happen after clearing the cutoff in that point of time. Only in Stephens. I didn't get through English honors. History honors, I got the call letter. I didn't go for the interview. I could have easily made it cutoff 86 था interview में कम भी आता. I could have easily gone through. Because then I realized history honor, this decision, why I'm talking about it, I regret. I used to regret throughout my college life. But now I don't. But why I'm sharing it, because it will be a very key turning point in my life again. So I opted for IP University main campus. I realized, alright, it's good college, but I missed on to something really big. I could have been in Stephens. 1-2 साल I used to regret about it. But life kept on going. IP University first year, I met one of my colleagues who is now, we are 2 partners in PSP Legal, the law firm I'm talking about. The other partner is Aditya Parudia. I will be talking about him also in between. He was also my batchmate. He was a hostler. I used to commute for around 2 hours every day, 2 hours to and fro. मैंने कहा मैं भी hostel लूँगा. So I went to the hostel, applied किया, hostel मिला second year में. I called Aditya मेरे साथ आ जा. कहता यार मेरे साथ. He used to stay with a senior in the 4th, 5th year. कहता यार ragging भी नहीं होती क्यों? Why would I come to you? So, but I have always. Since very beginning, I used to believe in investing in people. तो मैंने उसको बहुत सारा ज्ञान दिया. मैंने टेंशन मत ले, कोई टेंशन नहीं है, यंग है, कोई दिक्कत नहीं है, नए हैं. मैंने कहा 1 और 1 2 नहीं होंगे, हम 11 हो जाएंगे. So उसको मैंने बोला मेरे साथ हॉस्टल मेरे रूम में आने के लिए वो आया, and we were able to sail through the hostel life very comfortably. It was a good journey. 5 years got completed. I got the campus placement from my college, which was a 5, I would say, campus placement which happened in my college. 5 for 5 of the students. I was one of them who got selected. I refused the offer initially, but then I took on that offer. It was with a leading law firm, Clifford Chance, which I was talking about. It had its subsidiary in Gurgaon. So my father never wanted me to do a particular job. Since very beginning, he said कि अगर बेटा जब तूने इतने बड़े-बड़े ऑप्शन छोड़े, go into litigation straight away. वकालत करो अपना, चाहे it will take the gestation period. I thought of that the gestation period is too long. I asked for permission from my dad that I'm going to only work for 1 year. I'm going to fill my kitty with some salary. I don't feel like taking it from you. मुझे 1 साल काम करने दो. I will resign from the job. I started working with Clifford Chance in September 2011. In March 2012, after 6 months of working, we were supposed to get a bonus. My boss of Clifford Chance is sitting here, Raju. He gave me the highest bonus ever imagined in the company, right? So I got him here. Again, that's a story I will tell you. So he was my boss. We never knew each other, but of course, 6 months we developed a rapport. He said, and I got one of the highest by any imagination that bonus in the company. So my father was very happy again. June में almost 9 to 10 months हो चुके थे, तो I put in my papers, I resigned. I told Raju the first, सबसे पहले I told Raju, he was the first person. मैंने कहा boss मेरे को नहीं करना. I want enough money. मैं एक पैसा खर्च नहीं किया था, मतलब थोड़ा बहुत किया हो. People had their fancy iPhones, iPads, मैंने नहीं खर्चा किया. I knew I had to save that money. I have to be an entrepreneur. मुझे litigation करनी है, it's a hard journey. I have to take it up. I said each and every penny. जब मेरी जेब में 5 लाख हुए, मैंने बोला राजू, I'm giving it up. मेरे पास पैसा आ गया है. अब मैं अपना बिजनेस करूंगा, अपना लिटिगेशन करूंगा. चलेगी वकालत नहीं चलेगी, I can survive on it. मेरे खर्चे ज्यादा नहीं है, मतलब पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं है. तो राजू ने बोला यार नई पॉलिसी यही है, लंदन भेज रहे हैं क्लिफर्ड चांस से, और लंदन में गए ना तो अब्जॉर्ब हो जाओगे मेरे हेड ऑफिस में. 2 सैलरी मिलेंगी एंड द मिनिमम पैकेज 35 lakhs per annum, कुछ नहीं, प्लस द बोनस, प्लस द सिटीजनशिप, प्लस एक्स, प्लस वाई, प्लस जेड. And they have decided the criteria of sending the person who got the highest bonus. Correct? I said, Raju, if मैंने कहा राजू अगर हाँ बोल दिया, I'll be stuck into it. I made a promise to my dad, right? It's a dream I saw for a very long time. मैंने कहा I will not be able to take it. I'm very sorry. मैंने कहा I'm giving up. I gave a notice period for a month, and I left the company. My dad was very happy. Again, I will say what important role he played. I hail from a very middle class family. My dad always had aspiration. I'm the only son. He had a lot of aspiration. बेटा कमाए, ये करे, वो करे. From the day one उन्होंने जब भी मेरे को पढ़ते हुए देखा, जब मैं पढ़ता था 10 बजे के बाद हमेशा कहते थे बेटा किताब बंद कर. उन्होंने आज तक मुझे पढ़ने के लिए नहीं कहा, और रात को कहते थे बेटा नींद से जा सकती है. कमाने के लिए जब मैं कमा के भी आता था कहता जब तक नौकरी करनी करिए कोई टेंशन नहीं है, मैं कमा रहा हूँ, मैं बता. So
that's the kind of support I got from my father. Of course, my mother was used to offer the same support, but mother का वही support होता है ज़्यादातर. She cares for you, बेटा खाना खा लिया. So, and I used to say yes. So, that's the kind of family support I got. Then I put in my papers. That's the kind of support I got from my boss. I put in my papers. करने आया तो मैंने कहा शुरुआत कहाँ से की जाए. I opted for गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. मैंने फादर को कहा कि it's a long story, एक शॉर्ट अगेन. दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन 20 लाख की उस टाइम पे. तो 20 लाख से ऊपर का सिविल हाई कोर्ट जाएगा. अब वो 1 करोड़ हो गया है. गुड़गांव में उस टाइम पे एट द पीक 100 करोड़ का मामला हो तो सिविल कोर्ट ही चलेगा. मैंने कहा मेरे को ट्रायल सीखना है. आई वांट टू गो टू द लोवेस्ट कोर्ट, हाईएस्ट डिस्प्यूट्स. आई वांट टू लर्न द हार्डकोर ट्रायल ऑफ द क्रिमिनल एंड सिविल मैटर्स. ही सेड ऑलराइट. कि कहां जाना. मैंने कहा दिल्ली में नहीं है कि दिल्ली में क्रिमिनल मैटर्स अच्छे हैं, सिविल के लिए हाई कोर्ट जाते हैं, ट्रायल में मजा नहीं आता. मैंने कहा आई हैव टू लर्न द ट्रायल. उन्होंने कहा गुड़गांव. मैंने कहा गुड़गांव जाना है जी, मेरे को आप किसी लॉयर के पास लगवाओ. ही gave me a contact of one particular lawyer. मैं उनके पास गया, my senior. उनके पास जब मैं पहली बार गया तो अगेन मेरे फादर told me बेटा मुंशी से ज्यादा बात करियो. मुंशी जो सब सिखाएगा वो तुम और कोई नहीं सिखा सकता. So create a good rapport with the मुंशी. मैं अपने बॉस के ऑफिस गया हूँ. My boss was something, if you have seen the movie इकबाल मूवी में नसरुद्दीन शाह जो था, that was kind of my boss. My boss had retired from life and from litigation in a way. तो वो डेली प्रैक्टिस और आराम से आते थे. जिस दिन मैं 9 बजे पहुंचा तो वो पहले दिन 11 बजे आए. आके बैठे हम दोनों चेंबर में 2 घंटे बैठे. 3 घंटे में देख रहा हूँ मुंशी कहाँ है. मैंने फिर सर से बोला, सर कहते बेटे फाइल करवा रहा हूँ, ये उसमें पीएफआरसी होता है, पीएफआरसी फाइल करवाओ. मैंने कहा सर करा देंगे. मैंने कहा मुंशी नहीं आया. कहते बेटा मुंशी नहीं है मेरे पास. So I literally worked like a munshi. After that white collar job at OSC जहाँ में गाड़ी आती थी उठाने, गाड़ी छोड़ के जाती थी, सैलरी मिलती थी, बढ़िया आराम से कैफेटेरिया में लंच मिलता था, वहाँ पे कैंटीन में ऐश कराते थे. They used to do secondments, retreat फलाना ढिमकाना. यहाँ पे मैं मुंशी का काम करना शुरू किया मैंने from day 1 to 1 हफ्ते में मैं परेशान आ गया. दूसरे हफ्ते में स्टार्टिंग में फिर I would say that literally I'm talking about struggles of my life. सर की टेबल पे कपड़ा मारना पड़ता था. There was no office boy, nothing. सब कुछ. पर मैंने कहा जब गुरु से शिक्षा लेने आया, we have to start from the scratch. There was no salary for the first 2 months, nothing. But I would say, जेब से पैसे लग रहे थे. I was realizing it's very demotivating. You realize that बोलना आसान है, it's very demotivating. And the atmosphere you see there, district courts, is very very demotivating. तो उसके बाद क्या हुआ? But my boss was thankfully very good. Luckily क्या हुआ? अब मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ. Can I extend that time by 2 or 3 minutes? Yeah. So what happened was जब मैं पहले दिन ये हफ्ते 2 हफ्ते हुए थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एलमन से कॉपी लेने गया. मेरे सीनियर ने कहा 10 की ऑर्डर है, एलमन से ले. और एलमन इज द काइंड ऑफ क्लर्क इन द कोर्ट. तो मैं कॉपी लेने गया, एलमन ने मेरे को बोला नहीं मिलेगी. मैंने कहा सर ये आपको वो कॉपी का कहता 2 घंटे बाद आइए. मैं 2 बजे पहुंचा. उसने कहा नहीं अभी मैं लंच करूंगा बाद में आइए. एलमन इज लाइक अ क्लरिकल जॉब. मैं 4 बजे पहुंचा. वो कहता नहीं अभी टाइम नहीं कल आना. मैं 5 बजे जब वापस आया तो मैं बहुत सेट की मिल गई कॉपी. मैंने कहा उसने मना कर दिया. कहता है तेरे से वकालत नहीं होगी. कहते वकालत के लिए आग चाहिए होती है. कहते वो क्लर्क ने वकील को धमका दिया. मैंने कहा सर मैं तो कॉर्पोरेट से आया, मुझे इतना आइडिया नहीं. कहता है यार नहीं होगा. कहता कि जहां सच ना चले, ही टोल्ड, महाभारत का ज्ञान उन्होंने हिंदी में दिया देसी भाषा में. जहां सच ना चले वहां झूठ सही, और जहां हक ना मिले वहां झूठ सही. उन्होंने कहा कि झूठ कहता ये लेके जा. सो आई गॉट वेरी ब्लड खून खोला और भी आ रही है क्या करके. मैं गया एलमन के पास. एलमन अपना ऑफिस बंद करके निकल रहा था. मैंने एक गाली दी, 2 गाली दी. बिफोर आई कुड स्पीक द थर्ड अब्यूज उसने कॉपी निकाली. सर मैं आपको देने आ रहा था. Now the point is, I don't want to encourage those words or that conduct, but I just want to share the kind of journey one can have, anyone can have, from something very, I would say, sophisticated to something very rustic in this country. Something very rustic, that you have to be ready for it. If you're an entrepreneur, you have a team behind you. You can't say, "नहीं ऐसे ही काम होगा." Right? You have a team and you have responsibility. You have to execute. और अगर आप सही हो, मैंने कुछ गलत नहीं किया था. दैट्स व्हाई राइट उसको देनी थी कॉपी मुझे 4 बजे तक. उसने 5 बजे तक कॉपी, क्योंकि उसको लग रहा था नया वकील है, इंग्लिश में बात कर रहा है, सर करके कह रहा है. राइट. तो उसने कहा दबाओ जब तक दबाएगा 100 रुपए देके जाएगा तब दूंगा कॉपी. राइट. उसने एंटिसिपेट नहीं किया था कि 2 गाली देगा 2 और देगा. तो दैट्स द जर्नी आई फेस्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. 6 months of journey. Now my boss started giving me new opportunity. वो कहता था यार करके ये केस आर्गुमेंट करने हैं, फिर उसको रिसर्च के लिए करके आओ. So that is what I would say. I did a matter of trademark copyright. Those were one of the, I would say, best examples of the matter which जो मेरे बॉस को मिले थे. He let me argue bits. So again I'm telling you that people in your life, I would say people around you, somehow that magic
they play such an important role in pushing you to that journey, through that journey, right? He may not be one of the best lawyers in that district court, but he made sure that I would have the best exposure. And by God's grace, there was no munshi. I learned everything from the scratch. How to deal with that helmet, to that clerk, इसलिए तक जज से कैसे बात करनी है, क्या argument करनी है, and everything. I got demotivated at times. Being an entrepreneur, there are always days when you think of quitting. Right? We have to admit it very frankly. There are days. But then, of course, it's all about getting on. So after that, exactly 6 months, OSC I worked from 2011 till 2012 August. September I started in Gurgaon till March for 6 months exactly I started. मैंने सर के बैच हुए. मैंने कहा सर मेरे को दिल्ली जाना है. मेरे को 6 महीने ट्रायल सीखना था, मैंने सीख लिया. उन्होंने कहा बेटा मैं अभी दिल्ली जाना चाहता था. He was son of a retired ADG, a judge. उन्होंने कहा बेटा मैं अभी दिल्ली प्रैक्टिस करना चाहता था, बट मेरे फादर ने मुझे कहा कि बेटा दिल्ली ना एक समुंदर है और बहुत बड़े मगरमच्छ है उसके अंदर, तो फंस जाएगा. हमारा गांव सोना के पास था. दिस फादर टोल्ड हिम, उनका गांव सोना के पास था. कहता मैं यहाँ गुड़गांव की लोकल सोना के पास है, यहाँ प्रैक्टिस कर, तो दिल्ली कहाँ जाता है. कहता मैं बेटा मैं तो जा नहीं पाया, बट तू जा चलो. You go to Delhi. Why did I go to Delhi? District Court Gurgaon I was doing relatively well in 6 months. मतलब लोग जाने लगे थे मुझे, मतलब सर के क्लाइंट जाने लगे थे, तो वो सर की जगह फिर मेरे को फोन करते थे. मैंने कहा सर से बात करो, whatever those things used to happen. तो I got a flow, but मैंने कहा अगर मैं यहाँ टिक गया फिर से, why did I left OSC again? Same reason. लालच पे नहीं भटकना है, सीखना है, आगे नहीं करना है. मैंने कहा कि अभी यहाँ अटक गया, मैं यहीं रुका रह जाऊंगा. I need to go to Delhi. Delhi हुआ है हमारा मे बी फॉर फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई और फॉर लिटिगेशन देयर 30 कोर्ट्स इन दिल्ली. वी डोंट नॉट अवेयर ऑफ 6 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो 30,000 मटियाला और साकेत रोहिणी व्हाटएवर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 6 डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट्स, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, क्लैट. सो देयर आर 30 मोर कोर्ट्स. सो दैट you can't even imagine the exposure if you were willing. But the amount of lawyers which are there in Delhi is again phenomenal. इतना competition चल रहा है, but I decided कि सीखना है, करना है. I asked my friend for a favor. He said कि ठीक है, simple साहब उस टाइम पे law में थे in 2012. He asked his friend Sibbal and Company. Vivek Sibbal was my boss, who was running Sibbal and Company. So I was referred there. I went for the interview. उन्होंने कहा ठीक है नौकरी मिल जाएगी, but 18,000 salary litigation. कहता हम litigation में उससे ऊपर नहीं देते. I said all right, I'm willing to learn. I joined in March 2013 and I started working with the Sibbal Company. Again, I got a decent exposure of the commercial and civil litigation. 3 महीने हुए थे and I got a foot in Delhi. मैंने कहा कि अब ठीक है, अब तो कर लेंगे. I had zero contacts by the way. Though my father was a lawyer, but he served in the government service and he had never had any clients. Never ever had any personal client. That was another. Other than that, I had zero contacts in Delhi other than being studying in Delhi. I told very frankly, मैंने कहा कि यार अपना शुरू करना है. I will get a direction or something. So I spoke to my colleague Aditya again, जो मेरे साथ हॉस्टल में था. वो NUS करने चला गया था, वो अडवाणी एंड कंपनी में जॉब कर रहा था फिर NUS LLM करने. He came back and told me, मेरी और उसकी बात हो रही थी. We were drinking beer and I told him in June 2013. I spoke to him, मैंने कहा यार अपना करते हैं Aditya, बहुत टाइम हो गया. He said ठीक है. Again, I made him get into it. हमने October 2013 को we started the journey of PSP. So it's been 5 years. Now what my journey is, now this is I'm giving you a background at how I started, how I did. Now when you ask me about entrepreneurship, I will tell you the basic. हमारे पास 2 फाइल नहीं थी जब हमने शुरू किया था. There were not even 2 clients. एक नीलू भैया करके my father के very good friend, 15 years younger to my father, but I would say 10-15 years older to me. वो नीलू भैया करके is a big entrepreneur of फरीदाबाद. वो मेरे पास आए थे फोन करके, पीयूष तूने एक नया काम शुरू किया, मैं आता हूँ तेरे पास. वो मेरे पास आए, कहते हैं पीयूष मैं Mr. Dan, if you know somebody, गुड़गांव के टॉप शॉट लॉयर, कहता है I take service of Mr. Dan. दिल्ली का डिस्प्यूट है, कहते हैं तूने नया काम शुरू किया यार, आई विल गिव दैट अपॉर्चुनिटी. मैंने कहा सर बताओ. कहते हैं यार ऐसा सा डिस्प्यूट है, 12-22 लाख मेरे फंसे हुए हैं, करवा सकता है तो करवा दे क्या किस तरह से. मैंने कहा सर मैं करवा दूंगा. रादर गोइंग अ सिविल के केस में आप क्रिमिनल कंप्लेंट डालो, थाने में लेके जाओ, थाने से एसएचओ फोन करेगा, चीटिंग का केस बना दूंगा मैं. मैंने कहा सर बिल्कुल क्लियर कट चीटिंग की उसने, आपके 22 लाख जिस तरह से मारे. गो टू द एसएचओ, फाइल अ कंप्लेंट एंड इट विल गेट सॉर्टेड. उन्होंने कहा ठीक है तो अपनी फीस बता. मैंने कहा सर अभी भैया अभी कुछ फीस नहीं, आप पहले अपना चले जाओ कर लो. कहता अभी तूने शुरू किया. मैंने कहा डजंट मैटर. वो गए, he went to the SHO with a complaint which I drafted, spoke to the SHO. SHO ने IO को दी, IO ने फोन किया, the matter got solved within a week or 2 weeks. He called me up, said thank you very much. मैंने आदित्य से बात करी, मैंने कहा हो गया काम, वो करके फीस नहीं है. कहता फीस तो ले लेता. मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है. मैंने कहा इन्वेस्टमेंट, मैंने कहा बंदों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, that's one of the best things. He called me after 2 months. He got a client in a real estate matter. अपना जो उनका घर बना रहा था बिल्डर. That litigation is still going on. We get that client, उसकी client की हमने फीस कोट की थी उस टाइम पे relatively higher side पे 1.5 लाख रुपए for the complete high court litigation.
It was one of the first few matters, high paying clients हमारे पास आए. After that client we have got, we used to appear in that matter. दो किसानों का dispute था. उन्होंने एक किसान ने बिल्डर को जमीन बेची थी जो मेरा क्लाइंट था. जहाँ ये गांव का हुमायूंपुर सफदरजंग एनक्लेव इज अ वेरी पॉश एरिया इन दिल्ली. उसके साथ हुमायूंपुर लगता है, which is again a very prosperous village. Village कहने के लिए है, but वो है वो सफदरजंग एनक्लेव का पार्ट. उस गांव का वो जो दूसरा जिसने हमारे क्लाइंट को बेची थी प्रधान था, मिस्टर रन सिंह. मैं डेट पे जाता था, यूज्ड टू आर्ग्यू. रन सिंह का वकील कोई और था, उसका कोई और था. उनके वकील टाइम पे नहीं आते थे. आफ्टर 6 months रन सिंह मेरे पास आया, कहता सर आप टाइम पे आते हो, ये है वो है, मैंने आपको फोन पे सुना है, हम दोनों का पार्ट सेम है, मैंने तो बेची है, मैं भी आपको करना चाहता हूँ. And Run Singh came, and till late Run Singh has got the whole Humayunpur. मेरी 3-4 बार कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं हुमायूंपुर में, लीगल एड के कैंप्स हो चुके हैं. I've got more than 50 clients from Humayunpur, और they are so rich clients. First of all, I'm just going to give a, जो मेरे को Fortune 500 कंपनीज बिलिंग नहीं करती, वो आके टेबल पे कैश रख के जाते हैं, कहते हैं बाबूजी हमें विश्वास है, राइट? So one they have that trust. एक सीट जो मैंने नीरू भैया को एक प्रो बोनो ऑफर किया था, एंड ही फेल्ट ऑब्लाइज्ड. उन्होंने कहा ऐसा करता हूं, वो एक बंदे को बिल्डर को पकड़ के लाया कि भैया इसके पास दे के आ, पीयूष को दे के आ. I would say that's my one of the biggest learning of entrepreneurship, right? Invest in people. Investing in property, mutual funds, everything is very good, but the best investment is doing in people. Second important instance, I went to Chandigarh. I'm taking too much of your time, but I'm trying to wrap it up. Second, another, I would say, opportunity, I went to Chandigarh for procurement of work. That procurement of work led me to meeting 4 advocates. मैंने 3 को फोन किया, वहाँ पे जाके मिला. बिल्कुल 2013 के एंड की बात थी. तीनों ने कहा हाँ यार काम देंगे काम देंगे काम देंगे. तीनों ने बोला आई फील वेरी डिसअपॉइंटेड. मैंने कहा ऐसे तो काम मिलता नहीं है. एक चौथा नंबर मेरी जो मैं लेके गया था जिससे मिलना था, मैंने कहा इसको फोन नहीं करना, आई फीलिंग वेरी डिसअपॉइंटेड. मैंने कहा यार जाने से पहले आई शुड एटलीस्ट गिव इट अ शॉट. मैंने फोन किया, उसने उठाया नहीं. मैंने कहा वेरी गुड, आई विल. मैंने अपने होटल के लिए वापस जा रहा था चंडीगढ़ हाई कोर्ट से, एकदम से उनका कॉल बैक आ गया. इसको मैंने कॉल किया मिस्टर भूपेंद्र सिंह दलाल. ही वाज अगेन दैट पॉइंट ऑफ टाइम एडिशनल एडवोकेट जनरल, ठीक है. बट मैंने कहा यार बाकी सब लोगों ने गोली दी है, इन सबका ऑलरेडी कॉकस बना हुआ है, मुझे क्यों काम देंगे, मैं यंगस्टर. उसने बोला यार पीयूष आया हुआ, तू मिलने नहीं आया, तू आप चेंबर आ. मैंने कहा मैं निकल रहा था. कहता कोई टेंशन नहीं, तू आप मिलो. आई वेंट टू हिज चेंबर. उन्होंने 15-20 लॉ ऑफिसर्स बैठे थे, सबसे मिलाया, क्योंकि ये मेरा भाई है. कहता है इसको काम देना, पीयूष मेरा भाई है. 15 लोगों को कहता पीयूष काट दे. कहता ऊपर वाले चेंबर में चले गए. ऊपर वाले चेंबर में गए, काट दे. देयर वाज अनदर, देन आई वाज टॉकिंग टू समबडी, वो मेरे को इंट्रोड्यूस करा रहे थे. एकदम से वो सिख गए. एक सरदार जी पुलिस वाले से बात कर रहे थे. सरदार जी वाज अ लॉयर, ही वाज अ डिप्टी एडवोकेट जनरल. ही वाज स्पीकिंग टू समबडी. तो मैं जब वो बात कर रहे हैं तो इमीडिएटली जब सरदार जी ने मेरे को बोला कि पीयूष जी आप सुप्रीम कोर्ट से आए हो, मैंने सुना आप कजन हो भूपेंद्र जी की. मैंने कहा जी सर. उन्होंने कहा यार एक बार इधर आओ. मेरे हाथ पकड़ के साइड में ले गए. कहते यार मेरे पास एक केस है और पंजाब से आया है, बहुत बड़ा क्लाइंट है, कितनी फीस लोगे. मैंने कहा सर जैसे आप कहोगे कर लेंगे, वी आर रिलेटिवली वी आर जस्ट स्टार्टेड. कहते यार बहुत बड़ा मैटर है, विल यू बी एबल टू एंगेज अ सीनियर एडवोकेट. मैंने कहा वी विल बी एबल टू, वी विल ब्रीफ अ सीनियर एडवोकेट इफ रिक्वायर्ड. ही पेड अस 11 लाख रुपीस. एक हफ्ते के अंदर ही गिव अस. Now again the moral what I learned was 2 things, that one Bhupender Dalal and one was the Sardar ji. Bhupender Dalal's lesson was, my father used to tell me that खोटी अठन्नी से खरी चवन्नी अच्छी. So आप जेब में लेके घूमते रहो कि मेरे को 100 लोग जानते हैं, 500 लोग जानते हैं. अठन्नी मतलब बिगर वैल्यू, चवन्नी छोटी वैल्यू. और अगर आपके पास खरी चवन्नी है, आपके पास आपका ड्राइवर है या कोई भी आदमी है जो आपके लिए जान दे सकता है, लग के कर सकता है, या आपके लिए केयर्स फॉर यू, he will be more effective. So that Bhupender Dalal was more effective than all those 10-15 people for me in my life at that point of time. वो लेके गया मेरा हाथ पकड़ के. बाकी जिन्होंने उससे भी मैंने फोन कराया था, no one even cared क्या है. And that Sikh guy, that lesson what he gave me is what Tulsidas told. रहीमन इस संसार में सबसे मिलिए दाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए. Meet each and every person with so humble and so politeness. आपको पता नहीं आपके सामने भगवान खड़ा. So that Sikh guy was like he was like a god to me. He took me to 10 people and उसके that story didn't stop. Till date he is sending me clients from Punjab. उसने मेरे से मेरी जात नहीं पूछी, मेरा रिलीजन नहीं पूछा, मेरा धर्म. He never asked कहाँ से आते हो, क्या करते हो. He liked me. We spoke for half an hour. Repo click हुई, done. Till date it's continuing. Then the journey kept on continuing, and of course it's still continuing. Now evolving to the largest law firm. I'm sorry, how did it happen? I'm just cutting the story short. Class action litigation हुई.
We were doing the real estate matters. NCDRC ने टप्पा लगाया कि क्लास एक्शन लिटिगेशन होगी, एक केस के अंदर 500-100 कितने लोग मिल सकते हैं. Judgment happened. We were doing one matter. एक सुरेश जी जैसा आदमी, सुरेश जी referred 50 clients to me at that point of time. One of those persons got a group case. Now why I am telling you that? जिसको सुरेश जी ने रेफर किया था बहुत पहले फॉर वन मैटर, उसने कहा सर मेरे पास 100 लोगों का मैटर है. क्लास एक्शन अक्टूबर 2016 में जजमेंट आया. द लीडिंग लॉ फर्म्स ऑफ इंडिया वर स्लीपिंग. उनको लगता था ऐसा कुछ होगा नहीं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा. We were a team of that point of time 3 lawyers only, right? हमने कहा यार कैन वी डू इट, 100 लोग आएंगे हमारा पूरा ऑफिस भर जाएगा और पूरा चेंबर भर जाएगा, राइट? हमने कहा करते हैं यार, करके देखते हैं. We did that. We have that class litigation happening over and on, and now we are one of the biggest firms in class action. Secondly, that opportunity came JP insolvency matter. One of the biggest law firm, Legal, was doing it for 1,800 people. That again, this is a long story, but I don't have time for it. I called my team. My team had expanded till August 2017. We were a team of 15 lawyers. मैंने कहा यार 12 दिन का विंडो है इंसॉल्वेंसी की फॉर्म जमा करने का. मैंने कहा we have got 2000 clients, तो आ सकते हैं. मैंने कहा कैन वी डू इट? द टीम सेड गिवन यस सर, करेंगे सर. रात को सोना पड़ेगा. We booked a hotel. None of us left from our office for 12 days. मैंने अपनी वाइफ, she works in a corporate team, उसको बुलाया. My colleague, सबने अपनी फैमिली को बुलाया. They were filling those forms. Because all of them are lawyers. We work for 12 days in and now. हमने एक महीने में इतना रेवेन्यू किया which teams cannot do, which law firms cannot do in 1 month in August. Why? Because you have to invest in people again. I invested in few the brilliant people. My boss has joined me now. मैं हर 6 महीने बोलता था बॉस नौकरी से परेशान हो गया, आ जाना. Every time my boss has joined me. It's my honor now. Raju has left his job, cushioning job to come to me. Webber Tyagi again, a lawyer I was working with. सिर्फ मैं कहता जब भी मिलता था मैंने कहा जब नौकरी कंप्लीट हो जाए आज ही होते हैं कि अपना काम करेंगे. I have built up. I say that who are those people? I couldn't have done it alone. When I say my success story, it's people like Suresh ji who was standing there by you or by कि भैया काम आना है. Again सुरेश जी और मेरी स्टोरी बहुत लंबी है. Again so again all those things. It's invest in people. That's all I can talk about. It's Akshay Tritiya today, very auspicious occasion. Right, so it's very important. In case you get one person who's willing to die for you, other than your family, you have earned it. You need to have a team to create magic. You can't do it alone. And एक और एक 11 हो जाते हैं, एक और तीसरा मिल जाए. You can do anything which you can aspire. You can't do it alone. You have a brilliant team. आप उनको प्यार दो. It's not money. Money उनके लिए सब कुछ नहीं. आप उनको प्यार, उनको इज्जत, and you're able to give that to them. They'll be more than happy to assist you. Thank you so much.